यस, लास्ट के लेक्चर में हमने ऑलरेडी साउंड वेव्स के ऊपर जो थ्योरी है तो वो हमने देखा था ऑलरेडी. सो आज के लेक्चर में हमको डायरेक्टली एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिमेम्बर्ड द फॉर्मूले इन दिस चैप्टर. तो चैप्टर में जो फॉर्मूले है तो वो लर्न करके रखो ठीक से. तो यस, I already shared this PDF to you in the app. Hope all of you have got it. Yes. Okay. तो चलो एक एक करके फटाफट हम एमसीक्यूज देखेंगे ठीक से. Yes. See this first question. It's given that the ratio of speed of sound in nitrogen and helium at 300 Kelvin. अब देखो दो अलग अलग गैसेस के अंदर हमको जो साउंड का स्पीड होता है उसका रेशियो निकालना है. So we already know that the speed of sound in any gas actually depends on the number of factors, like as we already seen last time that the speed of sound in air or in any gas depends on the pressure and temperature, density. Basic formula क्या है उसके लिए हमको पता है already. The formula for velocity of sound in air is simply root of gamma p upon rho. बराबर है. तो ये फॉर्मूला है. ठीक है. अभी इस फॉर्मूला के अंदर अगर देखते हो ठीक से तो प्रेशर है, डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे हमको उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है. We want to find out the speed of sound in nitrogen and helium at 300 Kelvin. That means we must express it in terms of temperature and also obviously molar mass. तो already हमने last इसमें देखा था कि density equal to क्या होता है. तो density happens to be equal to mass upon volume. करेक्ट है. तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हमने रिप्लेस कर दिया इधर डेंसिटी के बदले इस इक्वेशन के अंदर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बनेगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट विल बी रूट ऑफ गैमा इनटू पी अपॉन डेंसिटी के बदले आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट है. यस. एंड दिस वॉल्यूम विल बी जस्ट टेकन अप इन द न्यूमरेटर सो एज टू गेट दिस एज गैमा इनटू पी वी अपॉन एम. करेक्ट है. ये हमको मिलता है. But at the same time, we know that this PV is always equal to nRT. करेक्ट है. ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. और फॉर 1 मोल PV is equal to RT. चलो ठीक है. अगर n मोल्स का अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो ठीक से. So we can say this will be equal to actually gamma as it is into PV. PV के बदले क्या आ जाएगा nRT आ जाएगा. और नीचे जो मास है तो mass of the gas is kept as it is. But also we know that the mass of the gas upon molar mass is always equal to the number of moles, right? तो number of moles का formula क्या है हमारे पास. Mass of the gas upon molar mass of the gas. If we denote this molar mass by m naught, then we can just express this capital M, that is the mass of the gas, can be expressed as this m naught multiplied by number of moles. Correct है. So m can be written to be equal to n into m naught. करेक्ट है. So if you put this value of m here, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रख देंगे उसका वैल्यू तो हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या मिलेगा या किसी भी गैस में वेलोसिटी कितना मिलेगा. तो हमको मिलेगा वो गैमा इनटू एन आर टी डिवाइडेड बाय मास. मास ऑफ द गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास. करेक्ट है कि नहीं. जिससे यहाँ पे n जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या सिंपली रूट ऑफ gamma into RT upon m naught, where m naught stands for molar mass of the gas. And from this formula we can conclude here that this gamma is going to be constant
R is constant, T is also constant. So only M naught is different for both of these gases like nitrogen and helium. If we see carefully, तो यहाँ पे मोलर मास ही उन दोनों का अलग अलग है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया 2 बार, तो हमको एक फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, फॉर हाइड्रोजन, फॉर नाइट्रोजन we can say the velocity of nitrogen gas, velocity of sound in nitrogen gas will be denoted by Vn, which will actually be equal to root of gamma RT upon Mn. बराबर है, Mn मतलब molar mass of nitrogen, and at the same time the velocity of the same sound in the helium gas. तो helium gas के अंदर sound का velocity कितना बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे Vh, which will actually be equal to root of again gamma RT as it is, and that is to be divided by molar mass of helium gas. So if we just divide these two equations, we can get simply this as Vn upon Vh. Okay, तो Vn upon Vh कितना बनेगा, अभी इसमें हम देख सकते हैं कि रूट जो है, तो रूट के अंदर गैमा आर टी अपॉन Mn, and that is to be divided by again root of gamma RT upon MH. करेक्ट है। अभी इसको अगर हम सपोज ये गैमा RT को जो कैंसिल कर देंगे ना, तो और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा सिंपली रूट ऑफ MH अपॉन Mn। देखो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है Vn अपॉन Vh इज इक्वल टू रूट ऑफ MH अपॉन Mn। ये जो इक्वेशन है ये एक सेकंड में भी डिराइव किया जा सकता है, just by knowing the fact that velocity of sound in air from this formula only. ये फॉर्मूला से हमको क्या पता चलता है कि velocity of sound in air is inversely proportional to the square root of molar mass. Okay, तो जब velocity of sound in air is inversely proportional to the molar mass, so what will be ratio then? तो v1 upon v2 will be actually equal to root of m2 upon m1. ये सिंपल सी बात हमको यहाँ पे यूज करनी है। अगर ये तुमको पता है तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं थी। सो जस्ट तुमको समझने के लिए मैंने ये सारे स्टेप्स किए हैं, बट इफ यू नो दैट this velocity is inversely proportional to the square root of molar mass, then we can just in a fraction of seconds take the ratio of velocity of sound in nitrogen to hydrogen, helium, to be equal to root of molar mass of helium upon molar mass of nitrogen. But already now we know that the molar mass of hydrogen, how much it is, helium, how much it is? कौन बताएगा, चलो चैट बॉक्स में डालो। What is the molar mass of helium? हीलियम का मोलर मास कितना है, किसको पता है? अब देखो हीलियम जो है वो उसका मॉलिक्यूल तो बनता नहीं है कि नहीं, तो हीलियम का जो एटम है वही मॉलिक्यूल हो गया, बिकॉज हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। सो मोनो एटॉमिक होने की वजह से वेरी गुड। सो बेसिकली इट इज 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और मोलर मास भी 4 ही बनेगा, क्योंकि हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? अभी नाइट्रोजन का कौन बताएगा, डालो चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। सम ऑफ यू आर सेइंग 14, बट दैट इज इनकरेक्ट। 14 नहीं है। 14 क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। याद रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास। एज वी ऑलरेडी नो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, नो डाउट, लेकिन जब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं तो वो N2 बन जाता है ऑटोमेटिकली, और जब N2 बोलते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है कि नहीं, तो दोनों का कंबाइंड मास कितना होगा? 14 का डबल, मतलब 28 होगा। याद रखो ठीक से। सो नाइट्रोजन का molecular weight होगा 28. Okay, so we have to replace it here in this formula. So we get this Vn upon Vh to be equal to root of Mh, which is 4 upon 28. And as we already know that this 4 ones are 4 sevens are, so we get this simplified as root of 1 upon 7. अभी 1 का रूट तो 1 ही बनता है, but we can say this will be
एक्चुअली शुड बी रूट ऑफ 1/7. ये रूट जो है पूरा होना चाहिए. ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन, बट द रूट शुड बी द कंप्लीट वन, नॉट सिंपली रूट ऑफ 1/7. ये नहीं, बल्कि वो इस तरह से होना चाहिए. इवन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 इज 1 ओनली एंड दिस 1 डिवाइडेड बाय रूट 7. ऐसा भी अगर लिखा तो भी चल जाएगा. तो 1/√7, this should be the answer which is going to be there in this option B with the correction. Okay, yes. चलो अभी दूसरा पढ़ो. The temperature at which the speed of sound in air becomes double to that of its value at 27 degrees Celsius is. तो देखो जितना 27 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड है, उसका डबल बनने के लिए, उसका डबल स्पीड बनने के लिए कितने टेम्परेचर पे हमको गैस को रखना पड़ेगा या एयर को रखना पड़ेगा, वो हमको चाहिए. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल टू इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस. राइट. तो उसके लिए देखो हमको क्या करना होगा. Yes, once again we have to use the same formula, that is velocity of sound in air is equal to gamma into RT upon M or M naught. But this case here we have to use this V is directly proportional to the square root of temperature now. So immediately we can get that V1 upon V2 is actually going to be root of T1 upon T2. correct है. तो ये हमको मिलता है. अब यहाँ पे उन्होंने जो दिया हुआ है तो यही है कि the temperature we have to find out, but that means T2 has been to be found out. okay, ये T2 हमको निकालना है. and T1 कितना दिया हुआ है. ये T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, which corresponds to in Kelvin as 300 Kelvin. करेक्ट है, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 plus 273, that is in Kelvin, so it becomes 300. remember. ओके तो चलो टेम्परेचर तो हमको मिल गया, T1 मिल गया, T2 हमको निकालना है. बट व्हाट इज द रिलेशनशिप गिवन हियर बिटवीन V1 एंड V2. सी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट टेम्परेचर T1 is going to be V1 and the velocity of sound at temperature T2 is going to be V2, and it is expected here that the V2 should be double to that of V1. देखो चेक करो एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन. क्या उससे तुमको ये पता चलता है कि V1 V2 should be double of V1. Yes, we can get to know that in this way. So we have to find out the temperature at which the velocity of sound in air becomes double to that its value at 27 degrees Celsius. मतलब V2 is the velocity at 22 degrees Celsius temperature, and it should be double of the velocity at T1 मतलब V1. okay, V1 से double होना चाहिए V2. तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे V2 का, तो उससे क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में. देखो तो हमको मिलेगा V1 अपॉन 2V1. करेक्ट है. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ, अभी T1 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब वो 300 हो गया. करेक्ट है. डोंट यूज सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय T2 which is to be found out. now just V1 gets cancelled, and if you just square on both sides, तो हमको मिलता है 1/4 is equal to 300 upon T2. correct है. so T2 comes out to be actually 1200 Kelvin. yes, very good. अथर्व नहीं 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 अथर्व 327 नहीं. देखो चेक करो एक बार ठीक से. T2 is obtained to be actually 300 Kelvin. देखो तो अगर सॉरी 1200 Kelvin, अगर 1200 Kelvin टेम्परेचर है तो उसको अगर हम सपोज इसमें करेंगे सेल्सियस में अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सेल्सियस में करने के लिए 1200 में से 273 माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी इन सेल्सियस. सो T2 कैन बी सपोज टू बी, करके देखो 927. यस, अरे वापस गड़बड़ कर दिया. 973 नहीं 927. ओके 927 डिग्री सेल्सियस. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टेम्परेचर which is already there in this option B here. okay, B option के अंदर ये है. ये समझा ठीक से. any doubt? okay, चलो थर्ड वन. it's very easy. a boat is
boat at anchor is rocked by the waves whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. Then the boat bounce up once every how many seconds? तो मतलब देखो ये सपोज वेव्स है, ठीक है, और यहाँ पे बोट है, ये सपोज बोट है। तो जैसे ही ये वेव्स यहाँ पे आएंगे ना, तो उसकी वजह से ये बोट जो है वो बाउंस होगा, करेक्ट है। और जैसे ही दूसरा वेव आएगा तो फिर से बाउंस होगा, मतलब क्रस्ट जब आएगा वहां पे तो बाउंस होगा। तो और हमको निकालना क्या है, द बोट बाउंसेस अप इन एवरी वंस इन एवरी, तो मतलब हमको पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है देखो रिक्शा पे, the crests are 100 meter apart. What does it mean? It's going to be the wavelength. So wavelength is going to be 100 meter, correct hai? And the velocity is also given. Velocity is given to be 25 meter per second. And once this wavelength is obtained and velocity is obtained, we can find out the frequency because we have v is equal to n lambda. So if we use it here, then we get this frequency is equal to v upon lambda, which comes out to be 25 upon 100, which comes out to be actually 1 by 4. Okay, the frequency 1 by 4 ho gaya. But we know that period is always the reciprocal of frequency, which becomes 1 upon 1 by 4. Matlab 4. So period becomes equal to 4 seconds as the final answer. So which is their option? Option C here. Chalo, ठीक है. So next one, let us try. Yes, it takes 2 seconds for a sound wave to travel between two fixed points when the day temperature is 10 degrees Celsius. If the temperature rises to 30 degrees Celsius, then the velocity sound waves travel between the same two fixed points in how many seconds? तो देखो अभी सपोज ये दो फिक्स पॉइंट्स है वो, तो यहाँ से साउंड वेव्स को इधर तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है बोला है 2 seconds. तो टाइम t1 is given to be 2 seconds when the temperature is going to be 10 degrees Celsius. So at that time velocity of the sound in air v1 would be actually v naught plus 0.61 into t. याद है ये फॉर्मूला टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो ये हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो ये v1 हो गया और यहाँ पे t1 कितना दिया है, सॉरी ये t1 मतलब यहाँ पे t1 मतलब टेम्परेचर है ना, तो इसको हम बोल देंगे θ1. ओके θ1, अभी θ1 कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस. ओके जब θ1 10 डिग्री सेल्सियस बनता है तो उस समय का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आराम से, v1 विल एक्चुअली बी इक्वल टू v नॉट मतलब 330 प्लस 10 into या 0.61 into 10, करेक्ट है. So this v1 actually becomes equal to 330 plus 6.1, which comes out to be actually 336.1. ये हो गया v1. ओके अभी दूसरा सेक्शन देखो, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है. If the temperature rises to 30 degrees Celsius, then the sound waves travel between the same two fixed parts is in. तो अभी यहाँ पे सपोज ये पार्ट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे साउंड वेव्स जो है वो जब 30 डिग्री स्पीड पे ट्रैवल करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पे ट्रैवल करेंगे तो उनका स्पीड जरूर बढ़ जाएगा, है कि नहीं. तो नाउ v2 हियर in this case will actually be v naught plus 0.61 into θ2, where θ2 is actually going to be 30 degrees Celsius, right? So if you just put it here, then we get this velocity of sound in air at 30 degrees Celsius to be simply equal to 330 plus 0.61 into 30, which comes out to be actually 330 plus, what is this, 6 3s are 18 or plus 3, 18.3, correct? Yeah. Yes, so it's 18.3. If we add it up here, then we get this as 348.3, correct? So this is 348.3 meter per second. This is going to be the velocity of sound in air at such a temperature, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. बट अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है साउंड वेव्स को वो तो सेम ही है,
this is the distance d which is traveled by the sound waves in this first case also and in the second case also. So the time required, यहाँ पे अगर हमने t2 बोल दिया इनको, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v2 है साउंड का, तो इसलिए यहाँ पे जब स्पीड v1 था तभी उस समय t1 इतना टाइम लगा था ये d इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, जबकि अभी स्पीड v2 बन गया तो अभी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे डिस्टेंस को इक्वेट करना है. इन द फर्स्ट केस वी कैन से दैट द डिस्टेंस is equal to v1 into t1, and in the second case the same distance d must be equal to v2 into t2, correct है. So if we just equate both of these equations, then we can get this v1 into t1 is equal to v2 into t2, correct है. But t2 is to be found out, so t2 को एक तरफ रखो और बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ, तो ये हमको मिलेगा t2 is equal to v1 t1 upon v2. And now if we just replace all the values, then what we can get here is v1 t1. v1 कितना है, तो देखो v1 is going to be 336 approximately into t1, how much it is, 2 here, and that is to be divided by v2. So v2 is going to be, see it here, 348, yes, 348 approximately, and this calculations should be डन. तो अभी ये देखो 2 को जब हम 336 अपॉन 348 इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, ठीक नहीं, तो रेशियो लेस देन 1 होने की वजह से ऑब्वियसली जो आंसर है वो थोड़ा कम ही होगा कि नहीं 2 से, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर आएगा दिस नंबर विल बी एक्चुअली लेस देन 2 बिकॉज दिस रेशियो इज गोइंग टू बी लेस देन 1, राइट. And that's why if we see the carefully in the options, then there is only one option which is less than 2 here, है कि नहीं. तो जब स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो कम टाइम में वो सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे, उसकी वजह से हम ये लॉजिकली जो आंसर है वो 1.9 सिलेक्ट कर सकते हैं. ये सब पूरा करने की भी जरूरत नहीं, बट इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए, इसमें से भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी बातें आपको इसमें से भी पता चल जाती है कि किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है. But actually, if you see the options, then we can just guess the answer within a fraction of seconds, just because since the temperature has been increased, and we know that the velocity of sound is directly proportional to the square root of temperature. So as temperature will increase, velocity will also increase. But if distance is kept constant, then the time and velocity इन दोनों के बीच में inverse relationship होता है, क्योंकि time taken is always equal to distance upon velocity. So time is inversely proportional to the velocity. So as temperature increases, velocity also increases, and since velocity increases, the time must be decreased. So time should decrease, and this only one option has a time which is less than 2 seconds. So we can just blindly select that option as a final correct one. Yes. Okay, fifth one, it's conceptual. If the speed of wave doubles as it passes from shallow water to deeper water, then its wavelength will be, yes, we already know that velocity, there is a relationship between velocity, frequency and wavelength. V is equal to n lambda. But when the waves pass from one medium to another medium, what happens is frequency remains constant. So since frequency will remain constant, so velocity will be directly proportional to the wavelength, right? And since velocity has been doubled, so wavelength will also get doubled, and that's why we can say this C will be the correct option. Yes, very good. Okay, next is in a sine wave, the minimum distance between two particles always having same speed is. ओके, अभी देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ सकते हो ठीक से. सेम स्पीड हमको पूछा है, तो अगर मान लो ये वेव है, ठीक है, इस वेव के अंदर हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है, समझो इस पार्टिकल को हम ए बोल देते हैं, इस वाले पार्टिकल को ए बोल देंगे, ठीक है. अभी इस वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, अभी उसका नाम जो है वो बी बोल देंगे. अभी सोचो ठीक से कि ये पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा है,
At the same time, this particle is moving in the upward direction, right? So but with the same speed, बराबर है, इन दोनों का जो स्पीड है वो सेम रहेगा. तो अगर सपोज ये वाला पार्टिकल है, ऑलवेज बोला है ना, हाँ ऑलवेज, ऑलवेज नॉट एनी एट एनी इंस्टेंट, वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, बट ऑलवेज, राइट, ऑलवेज सेम स्पीड. दैट मीन्स अभी देखो ये जो पार्टिकल्स है, अगर इनको ठीक से देखो तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, एक क्रस्ट का पार्टिकल और एक ट्रफ का पार्टिकल, इमेजिन करो ठीक से. जब ये क्रस्ट का पार्टिकल नीचे जाएगा और यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा, तो ये ट्रफ वाला पार्टिकल किधर जाएगा, इधर ओरिजिन पे आएगा. फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो पार्टिकल है क्रस्ट वाला, वो नीचे उस समय में मूव कर रहा होगा, और ये जो दूसरा पार्टिकल है ये ऊपर तरफ मूव कर रहा होगा. बट व्हेन दिस पार्टिकल विल जस्ट रीच एट द बॉटम पॉइंट, यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उस समय ये वाला जो पार्टिकल है बी, यहाँ पे ये ऊपर तरफ पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो. तो इसका मतलब ये दो पार्टिकल्स जो है, दे विल ऑलवेज हैव सेम स्पीड, not velocities, but speed will be same, obviously, because they are just at the one is at the crest and other is at the trough. तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये पार्टिकल जब यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा तो ये पार्टिकल भी उसके मीन पोजीशन पे आएगा, और ये पार्टिकल जब इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, लोएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे हाईएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा. तो जब ये पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, और जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा. बट बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स, दिस ए एंड बी, विल बी ऑलवेज इन द सेम स्पीड. बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स will always be in the same speed, and that's why the distance between these two particles is going to be lambda by 2 here, because one is at the crest and the other one is at the trough. So these are the two particles which are going to be in the same speed, always in the same speed, and that in the distance between them is going to be lambda by 2 here. Yes, just try to read this next question. Try to solve it yourself. It's based on Doppler effect, right? ओके, जैसा कि हमने उस दिन भी देखा था एनिमेशन, तो लेट अस सी दिस वंस अगेन. देखो स्लो मोशन में तुमको दिखा रहे हैं. देखो ठीक से, अभी कौन से ऐसे पार्टिकल्स है जो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. देखो ठीक से, देखो अब अगर 0 सेंटीमीटर वाला एक पार्टिकल देखो ठीक से, और अगर ये 2 सेंटीमीटर वाला एक पार्टिकल अगर देखो ठीक से, ठीक है, तो उसमें देख सकते हो ठीक से कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है, दे विल बी एट द सेम स्पीड. दोनों का स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहेगा. देखो कैसे पता, जस्ट वेट.
देखो ठीक से, अगर ये फर्स्ट ग्रीन वाला जो पार्टिकल है कि नहीं, उसको अगर फोकस करो ठीक से, ये देखो ये ग्रीन वाला पार्टिकल, ये, और ये दूसरा ग्रीन वाला पार्टिकल, तो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है तो ये पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा होता है, बट विद द सेम स्पीड. यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. ओके, यस, ठीक है ना, समझ में आ गया ठीक से. चलो ठीक है, अभी 7th वाला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे फटाफट. An observer is approaching a stationary source with the velocity 1/4 of the velocity of sound in air. Then the ratio of apparent frequency to the actual frequency of the source is. It's an example of Doppler effect. This is suppose the source, okay, and this observer is approaching towards the source, and source is stationary. तो source जो है तो वो stationary है, तो source का जो speed है तो वो हम बोल देंगे 0 है. बट द ऑब्जर्वर का जो स्पीड है VL या VO, उसको डिनोट कर सकते हैं. इट इज गिवन टू बी 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, करेक्ट है. तो अभी ऐसे केस में फॉर्मूला क्या मिलता है हमको, हमने कल देखा था अप्रोचिंग सिचुएशन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, V प्लस VO क्या VL अपॉन V माइनस VS इंटू N, करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है NA इज इक्वल टू, यहाँ पे लेकिन अभी एस जो है, सोर्स जो है वो रेस्ट में है करके यहाँ पे नीचे जो है 0 डालना पड़ेगा, बट ऊपर में जो है तो V एज इट इज प्लस VL के बदले क्या रखना है हमको, ये 1/4 ऑफ V डालना है, तो इट विल बिकम V/4 एक्चुअली, राइट. So this is V/4 and that is to be divided by simply V, because V minus 0 becomes V only. Yes, and that is multiplied with N. So if we just simplify this further, then we can get this. अभी देखो V plus V/4 क्या बनता है, it becomes 5V/4, correct है, and that is to be divided by V here, and that is multiplied with N. So here we can see clearly that this V just gets cancelled, right, and what we are left with is NA is equal to 5/4 times of N, okay, which means this NA upon N will be actually equal to 5/4, which is going to be there in the option number B here, which is the correct one. Yes, very good. Chalo, next वाला, a car moving along x-axis with a velocity v equal to 20 meter per second sounds a whistle of frequency 660 hertz. If the speed of sound in air is 340 meter per second, the apparent frequency heard by the observer at A is. Yes, so देखो यहाँ पे मैंने उस डॉपलर इफेक्ट के डिस्कशन में बताया था कि whenever the source and sound are not traveling along the line joining them, तो अभी यहाँ पे देखो ये A पॉइंट पे वो ऑब्जर्वर है, और ये जो V है, V स्पीड से ये इस तरफ जा रहा है, नो डाउट, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन the line joining these two is making an angle of 60 degree with the line joining them, and that's why we can see. अभी देखो यहाँ पे a car is moving along x axis, तो मतलब ये this is the car, okay, which is moving along this x axis with the speed of v equal to 20 meter per second, and it sounds a whistle. तो ये source हो गया कि नहीं, this is the source actually, so we can say the speed of source is vs, which is 20 meter per second here, and its frequency, original frequency कितना है इस कार के हॉर्न का, 660 हर्ट्ज है, ओके. अभी स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट ए. अभी ए मतलब क्या है, दिस इज द ऑब्जर्वर, करेक्ट है.
दिस इज द लिसनर एंड लिसनर का स्पीड कितना है, इट इज 0 बिकॉज वो रेस्ट में है, उसके बारे में उसका स्पीड कुछ दिया ही नहीं है, जस्ट एट ए बोला है ना, तो इसलिए वो 0 ही रहेगा उसका स्पीड। ठीक है, तो अभी इसमें डॉपलर इफेक्ट अगर हमको अप्लाई करना है तो इस लाइन में अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड सोर्स, राइट? So we'll have to resolve this velocity v into two components. So let us try to resolve the speed of the source in two components, which is already along this x-axis. तो इस x-axis के along जो vs है, तो इस vs को हम दो components में resolve करने वाले हैं। उसमें से एक component जो बनेगा इस direction में आएगा, उसको हमको बोलना होगा vs into cos theta, and theta is 60, so it will be cos 60. So this component will be actually vs cos 60, and this another component will be of no use. Okay, will not produce any Doppler effect here. That's why we have to use this component here to in order to find out the apparent frequency. Okay, तो apparent frequency कैसे मिलने वाला है हमको? तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, Na is equal to, again the source is moving towards the observer, right? So the situation is approaching, so we have to use the formula V plus VL upon V minus Vs into N. But as we already know that this VL is 0, so therefore we can say that N frequency, apparent frequency, will actually be equal to V plus 0, and that is to be divided by V minus Vs. What is this Vs here? It is to be considered as Vs cos 60, remember. So it will be actually Vs into cos 60. समझा ये cos 60 कैसे आया? You have to resolve this velocity and consider the component of that velocity along the line joining this source and observer, remember. Okay, so multiplied by n, and if we just put all the values now here, then we can get this v is nothing but 340. See it is given already, so this is 340 divided by v मतलब 340 फिर से माइनस vs मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 मतलब हाफ, ओके, और n मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि 660 दिया हुआ है, ओके. सो जस्ट सॉल्व दिस and we can get this 340 upon 340 minus what is this 20 multiplied by half, and that is multiplied with 660, right? So that it becomes actually 340 divided by, yes, 340 minus 10, okay, and that is multiplied with 660. Yes, so it comes out to be 340 divided by 330 multiplied by 660, which happens to be 330 का डबल ही तो है नहीं है 660, तो इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 340 कितना बनेगा? 680 बन जाएगा. So 680 hertz will be the frequency, yes, heard by this observer. The observer or listener will hear the frequency of 680 hertz in this case. Chalo, next one, ninth one. The apparent frequency of a note is 200 hertz when the listener is moving with a velocity of 400 meter per second towards a stationary source. When he moves away from the same source with the same speed, देखो यहाँ पे, just remember this part of the question. The apparent frequency of the note is 200 hertz when the listener, suppose this is the source and this is suppose the listener, it is moving here in this direction with the speed of 40 meter per second. तो ये क्या हो गया? VL हो गया कि नहीं? Listener का speed मतलब VL होता है, and frequency, original frequency कितना है? 200 hertz. और नहीं, ये original frequency नहीं है, देखो ठीक से पढ़ो क्या दिया हुआ है. The apparent frequency for a note is 200. That means when this listener is moving in this direction here, at that time he hears the frequency of 200 hertz. That means it is going to be the apparent frequency, okay, and original frequency is not given, okay, and Vs is going to be 0, right? Okay, so when he moves away from the same source with the same speed, अगर ये listener जो है वो अगर same speed से अगर दूर जाने लग गया, तो
तो उस केस में क्या होगा देखो ठीक से, यस the apparent frequency of the same note is 160 hertz only. That means na dash उसको बोल देंगे. When it is moving away with the same speed, the apparent frequency becomes na dash, which is given to be 160 hertz. Okay, so using these two we have to find out the velocity of sound in air in meter per second. Okay, तो velocity of sound कैसे निकालेंगे, देखो na के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ. na मतलब यहाँ पे अप्रोचिंग सिचुएशन है कि नहीं, तो यहाँ पे v प्लस VL डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू N, ये बनेगा. और Na कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, और इसमें V प्लस VL कितना है, 40 है. ठीक है ठीक से, तो यहाँ पे 40 डालना है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय V minus VS. VS is going to be 0 because the stationary source is given here, so इसलिए यहाँ पे V आ जाएगा, और into N. N again we don't know here, just write this as it is and get it as 200 is equal to V plus 40 upon V into N. Yes, this is equation number 1 we have obtained here. Now in the second case, when the same listener is moving away with the speed of 40 meter per second from the source, at that time its apparent frequency becomes 160 hertz. So what is the formula for Na dash here? Na dash, it is a receding situation. तो receding situation में formula कौन सा होता है, V minus VL upon V plus VS, right? But again VS is 0, so we can just modify this as 160 is equal to V minus VL, it is 40 again, and divided by V plus 0, and that is multiplied with N, which can be written as 160 is equal to V minus 40 upon V into N. Yes, this is equation number 2 here. Okay, so now just solve these two equations. तो इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखो ठीक से, just take the ratio. If you just take the ratio, we can get the correct answer easily. So see here, if you take the ratio, then we can get this 200 upon 160 is going to be equal to N will get just cancelled, V also will get cancelled, and we'll be left with V plus 40 upon V minus 40. Correct hai? Yes, so if we just reduce this by 40, then 40 5s are and 40 4s are. Correct hai? So we get that 5 by 4 is actually equal to V plus 40 upon V minus 40. And if we just apply componendo and dividendo on both the sides here, then we can get this as 5 plus 4 upon 5 minus 4, which has to be equal to, here it is V plus 40 plus V minus 40 divided by V plus 40 minus V plus 40. And it will be here 40 will get cancelled, and here V will get cancelled, and we'll be left with 9 by 1 is equal to, what is this, 2V upon 80. So that this 2 gets cancelled, leaving behind 40. So 9 into 40 comes out to be V. So that V becomes actually equal to 360. Okay, meter per second, right? So this is actually going to be the velocity of sound in air, which is 360 meter per second. Yes, चलो ठीक है. सो ये जो बाकी के क्वेश्चंस है वो थोड़ा करके रखो, डाउट्स निकाल के रखो, so that we can discuss them in the next lecture. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम MCQ से कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो we'll try to finish it in the next lecture. ये चैप्टर खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे. If not, then one more lecture will be required for this chapter. Okay, 30 MCQs है. देखेंगे तुमको कितने आते हैं, तुम अगर कितने करते हो तो उसके हिसाब से. चलो ठीक है. So thank you all of you.
यस यस, ऑल ऑफ सभी को मेरी तरफ से संक्रांत के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।